Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Notes, Changing the Way of Learning। स्वागत है आप सबका। अब हम बात करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट 14 लेके। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर जो आपका अपकमिंग कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। 201 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड इज नॉट रिकमेंडेड बाय IS 456 1978। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी M55। 202 नंबर क्वेश्चन, द कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M25 मीन्स that the compressive strength of 15 semi-cube at 28 days after mixing is, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 203, the test conducted in the laboratory on the specimen made out of trial concrete mix is called preliminary test। 204 number question, in performing preliminary test the molds required for test specimen should be rigid, it is correct। The mix should be stored in airtight containers, yes it is correct। The aggregate should be dry, yes it is correct। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। आफ्टर मोल्डिंग द टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ ट्रायल मिक्स आर प्लेस्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट आंसर डी। 206 नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए टेस्ट स्पेसिमेन it is necessary to mix the cement and fine aggregate by dry hand, yes it is correct। Mix the coarse aggregate, it is correct। Mix water to the cement, fine aggregate and coarse aggregate, it is correct। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी। 207 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M25, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी 1:1.5:3। द प्रिलिमिनरी टेस्ट इज ऑलवेज कंडक्टेड इन द फील्ड, इट इज करेक्ट। 208 नंबर क्वेश्चन, 208 नंबर क्वेश्चन, सॉरी गलत बोला, इट इज डिस्करेज। 209 नंबर क्वेश्चन, इन प्रिलिमिनरी टेस्ट द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द मोल्ड इन 3 लेयर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, करेक्ट आंसर बी। ईच लेयर ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड इन द मोल्ड इन प्रिलिमिनरी टेस्ट the compact is compacted 25 times with a 20 mm diameter rod and 60 semi in length, it is wrong। यहाँ पे जो रेंजिंग रॉड रहता उसका डाया 16 mm। 211 नंबर क्वेश्चन, द प्रिलिमिनरी टेस्ट शुड बी repeated if the difference of compressive strength of 3 test specimen exceeds 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 112 नंबर क्वेश्चन, फॉर मैश कंक्रीट इन पायर्स एंड अबैटमेंट्स द ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स्ड यूज इज
1:3:6, correct answer D. 213 number question, in performing the ox test, the mold for test specimen should be made of non-absorbent material. It is correct. The mold should be constructed in such a way that there is leakage of water from test specimen during molding. Yes. The base plate of the mold should be of non-absorbent material. Yes, यहाँ पे correct answer D, all of the above. 214 number question, for highly loaded column the concrete mixed used is of proportion 1:1:2. करेक्ट आंसर है. 215 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट प्रोपोर्शनिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट लार्जली डिपेंड्स अपॉन बाकिंग ऑफ सैंड, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज. 216 नंबर क्वेश्चन, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट आर in the ratio of 1:2:4, then the grade of concrete is M15. 217 number question, if 30% excess water is added, the strength of concrete is reduced by 50%. The finer the sand, greater is the blockage. It is correct. 219 number question, the concrete in which preliminary tests are performed for designing the mix is called controlled concrete. 220 number question, the maximum quantity of aggregate per 50 kg of cement should not exceed. Correct answer D, 450 kg. 450 kg. 221 number question, the minimum quantity of cement to be used in controlled concrete is specified as 220 kg per cm square. 222 number, the concrete in which no preliminary tests are performed for designing the mixed is called ordinary concrete. Correct answer D. 223 number question, the ordinary concrete is not used for M40 grade of concrete mix. 224 number question, the controlled concrete is used for 1 grade of concrete mixed, 3 grades of concrete mix, 5 grades of concrete mix. यहाँ पे करेक्ट आंसर डी, ए बी सी तीनों आंसर होगा. 225 नंबर क्वेश्चन, the water used for ordinary concrete is equal to 5% by weight of aggregate plus 30% by weight of cement. 226 number question, for reinforced cement concrete lintels and slabs the nominal size of coarse aggregate should 15 mm. 227 number question, which of the following proportion of different ingredients of concrete mix conform to the arbitrary method of mixing?
1:3:7. 228 number question. The factor which affects the design of concrete mixed is finest modulus, water cement ratio, slumped. यहाँ पे करेक्ट आंसर डी. In arbitrary mix method, the coarse aggregate are taken twice the fine aggregate. It is correct. True. 230 number question. The percentage of fine aggregate to the combined aggregate is obtained by the relation. यहाँ पे करेक्ट आंसर सी. P equal to x minus z by z minus y into 100. यहाँ पे x का फाइन मॉड्यूलस फॉर कोर्स एग्रीगेट, y फाइन aggregate and z combined aggregates respectively. दोस्तों 31 number question. In order to obtain the required workability, the minimum quantity of water to be added to fine and coarse aggregate is determined by the relation water cement ratio into P equal to 0.3 P plus 0.1 Y plus 0.01 Z. यहाँ पे करेक्ट आंसर ये. 232 number question. If 50 kg of fine aggregate and 100 kg of coarse aggregate are mixed in a concrete whose water cement ratio is 0.6, the weight of water required for harsh mix is. यहाँ पे करेक्ट आंसर सी 12 kg. 233 number question. The number of bag of cement required per cubic meter of 1:2:4 concrete will be approximately. यहाँ पे 5 to 6 bag. 234 number question. A mix with water cement ratio of 0.78 is termed as wet mix. It is correct. Yes. 235 number question. In Indian Standard Code specifies that the crushing strength for which the mix should be designed in the laboratory should be 1.25 times the strength actually required. Correct answer ये. 236 number question. In Voigt's method of determining the quantity of cement paste, it is assumed that the voids in the coarse aggregate are filled by the fine aggregates. It is correct. Volume of fine aggregate required for 1 cubic meter 1 MQ of coarse aggregate is equal to total voids in coarse aggregate plus 10% aggregate extra to allow for additional voids created by wedging action. It is correct. Volume of cement paste required for 1 MQ of coarse aggregate is equal to total volume of voids in the fine aggregate plus 15% aggregate extra to allow for additional voids created by wetting action. ये भी करेक्ट है. यहाँ पे करेक्ट आंसर डी. ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट. 237 number question. The workability of concrete mix increases with the increase in moisture content. It is correct.
238 नंबर क्वेश्चन, दी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इज, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी, बोथ ए एंड बी। ये क्या बता रहे, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेडिंग, बी टू मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ मॉइस्चर। 239 नंबर क्वेश्चन, 239, द मेन रिक्वायरमेंट व्हिच ए वेयर हाउस शुड फुलफिल इज दैट, यहाँ पे ए एंड बी आंसर होगा। इट्स walls should be waterproof masonry construction, its roof should be leak proof। 240 नंबर क्वेश्चन, the term water house pack means, correct answer C, pressure compaction of bags on lower layers, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी। सो गाइज इट इज़ मच फॉर टुडे। अगर आप हमारा चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।